There are a lot of things I love about indie games. इन गेम्स का वर्ल्ड डिज़ाइन, डिफरेंट आर्ट स्टाइल, उनका गेम प्ले, उनका म्यूजिक, लेकिन खासकर द क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस ऑफ एन इंडी गेम. ये वाला फीचर, दिस फीचर राइट हियर, इज द बिगेस्ट रीजन टू वाई आई लव एंड अप्रिशिएट इंडी गेम्स. इंडी गेम्स के पास रूम होता है क्रिएटिव एंड नई चीज़ ट्राई करने का, because they aren't held back by a billion-dollar investor company which is much more focused on building a product rather than a game. Most of the indie games have Kickstarters, just people willing to invest their money in a creative project. And indie games have a beautiful way of thanking their Kickstarters. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है probably मेरे favorite indie game Hollow Knight में. हॉलो नाइट के मैसिव एंड यूनिक ओपन वर्ल्ड में एक छोटा सा पार्ट है कॉल्ड श्राइन ऑफ बिलीवर्स, विच इज़ अ सीक्रेट रूम जहाँ पर हर इंपॉर्टेंट किकस्टार्टर का नाम लिखा है विद अ लिटिल नोट. I mean, come on, having your name in one of the greatest games ever made must be a special feeling. And there are a lot of other indie games that do this as well. Outer Wilds does it, Undertale does it, and so many other games do it. Making video games or any other art requires a lot of time and money. I wish creative काम में पैसा इतना important factor नहीं होता, but that is not the reality we live in. और वीडियो गेम्स तो बस एक एग्जाम्पल है. अनदर ग्रेट एग्जाम्पल आर मूवीज, एंड यू डोंट रियली नीड टू लुक फार इन दिस केस. अगर आप मेरे एज के आसपास के हो एंड प्रॉबेबली वॉच्ड अ लॉट ऑफ टीवी ग्रोइंग अप, आपने प्रॉबेबली ये एड टीवी पे जरूर देखा होगा. दूध का सागर बहता जाए, कंगन सोने की खनकाए, सुनो द्वार पे शहनाई, मारे घर झंझन लक्ष्मी के बाजे, ओ मारे घर झंझन लक्ष्मी. This ad probably is one of the most iconic ads out there, right up there with the Imperial Blue Men Will Be Men ads, which are hilarious. But coming back to this ad, you know what makes this ad so iconic? It's the song Mero Gaam Khatha Pare, which is actually a song from the movie Manthan, which was released in the year 1976. और मुझे ये मूवी मंथन की मूवी के बारे में आप लोग को बताना है. This movie is about a veterinary doctor, Dr. Rao, who arrives in a small town in Gujarat with the goal कि यहाँ पे हम दूध के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी करेंगे, जिससे सारे गांव वालों की बहुत मदद होगी, बिकॉज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा देगी. So the movie is about the challenges faced by Dr. Rao in trying to achieve this goal. And do you know what this cooperative society that he was trying to establish is called today? It's called Amul. मंथन बहुत ही अच्छी मूवी है जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सब देखो. एंड आई नो मैं पहला आदमी नहीं होऊंगा जो आपको मंथन रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज प्रॉबेबली अगर आपने कभी अपने स्कूल में हिस्ट्री क्लास में ध्यान दिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर आपकी मैम ने ये मूवी का नाम तो लिया ही होगा, बट ऑफकोर्स यू वर टू बिजी नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास. दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, आरंट यू? Disappointment. Anyways, this movie is entirely free and available to watch on YouTube on Amul's own channel. And I mean, it's a Shyam Benegal film, so of course it's a very good movie, and it probably has one of the best. Like, I really love this movie's climax. For me, it's right up there with Whiplash. Lekin, you know what is the most fascinating thing about this movie? It's not the movie itself, but how this movie was made. This movie was funded by 500,000, a half a million farmers in Gujarat who each contributed 2 rupees towards the development of this movie. Manthan till this day is the largest crowd-funded movie in India. Imagine having 500,000 Kickstarters for your creative project. Insane. Ambitious projects like Hollow Knight, Outer Wilds, Undertale, Manthan would never be possible without the support of people willing to invest in a creative project. Now the reason मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ और आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. After all, you guys are pretty smart. I need you guys to be my Kickstarters, my 500,000 farmers. I am introducing channel memberships. और मेरे में दम नहीं था ये डायरेक्टली आपको बताने के लिए. दैट्स वाई आई टॉक्ड अबाउट इंडी गेम्स एंड मूवीज फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आपका पहला सवाल होगा वाई, लाइक अभी क्यों? एंड अगर मैं सिंपली आंसर दूं तो इट्स बिकॉज आई वांट टू स्केल अप द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस दैट आई एम मेकिंग. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी की क्वालिटी ख़राब है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई मेकिंग न्यू स्टफ, एंड मेकिंग न्यू स्टफ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड इम्पॉर्टेंटली मनी. अब टेंशन मत लेना, आई एम नॉट गोइंग टू टर्न इन टू डच. वी जस्ट नीड मोर मनी. और ऐसा कुछ नहीं है. दीज मेम्बरशिप्स आर फॉर सपोर्ट एंड नॉट फॉर एक्सेस.
तो अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेते हो, इट्स टोटली फाइन. आई डोंट रियली वांट टू मेक मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट बिकॉज आई फील लाइक दैट विल क्रिएट अ डिवाइड इन दिस स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड नीश कम्युनिटी दैट वी हैव, एंड आई रियली डोंट वांट टू डू दैट. Now let me address the elephant in the room, the pricing. अब रही बात प्राइसिंग की, there are two tiers. The first tier is the gamer tier at rupees 59 per month. This is the more pocket friendly tier. और अगर आपको ऐसा नहीं लगता, look at it this way. The gamer tier costs the same as 2 plates of momos. Costs may vary depending on where you live. सो नेक्स्ट टाइम जब आप घूमने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त को बोल देना टू कवर फॉर यू सिर्फ एक दिन के लिए, एंड इन रिटर्न आई विल मेक वीडियोज वर्थ वॉचिंग while you're eating 5 or 6 plates of momos. Now look at it like a mathematical equation. Give up 2 plates of momos to earn content to watch while eating 5 or 6 plates of momos. Now that's a good deal. That is a damn good deal. I'd take that deal. The second tier is the highest tier, the producer tier, at rupees 159 per month. I know वो थोड़ा expensive है, but it is hugely incentivized as well. Every member of this tier will get mentions or credits at the end of every single video. Something like this, your name is right here, or your name is right here. You figure it out. You know how creators do it. So you guys will get to be a part of my very own shrine of believers. So that's a great incentive according to me. मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हो. अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हो, ऐसा नहीं है कि आई विल स्टॉप केयरिंग अबाउट यू. देयर विल बी नो लॉस ऑफ लव इन माई हार्ट फॉर यू गाइज, इवन इफ यू डोंट बाय द मेंबरशिप. एंड आई मीन, ऑफ कोर्स दैट वोंट बी द केस. You, just by making the decision to watch my video entirely, or perhaps share it with your friend, or you watch those videos again, that helps me out, not just me or any creator, a lot, like a lot. So I am already thankful enough, but I'd just be a little more thankful if you buy the membership for the channel because it supports the creator a lot. अब अगर आप अपसेट हो कि यार आर्यन सीधा सीधा ही बोल देते, ये बकवास करने किसने बोला, या आई विश मैं बोल पाता डायरेक्टली, बट आई एम टू मच ऑफ अ पुसी. लाइक यू रियली थिंक मैं बोलूँगा बाय माई मेंबरशिप्स जब मैं स्ट्रगल करता हूँ सब्सक्राइब टू द चैनल बोलने में? आपको क्या लगता है मैं इंटेंशनली लास्ट में वो सब्सक्राइब वर्ड डालता हूँ एवरी वीडियो में? नहीं, मेरे में दम नहीं है बोलना में कि सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स वाई दैट वर्ड इज देयर. So you really expect me to say buy channel membership? Yeah, that wasn't going to happen anytime soon. Now you might feel that this video was a huge time waste and essentially one big ad to buy your membership, and I disagree. I mean, come on, if there is one big thing that I told you guys about was Shrine of Believers and especially Manthan. So I see this as an absolute win. Anyways, video तो अब खत्म हो चुकी है. So if you do decide to buy the membership, thank you so much. And if you don't, that's totally fine. कोई बात नहीं. And I'll see you guys in the next video, the proper video. Okay, bye.